Namaste. Welcome back to my YouTube channel eEducator. Okay, in this video we'll discuss about the standard 9 subject social science. Okay, chapter number 16 climate. We'll discuss about the textbook exercise. And if you are new and if you have not subscribed my channel, click on subscribe button to subscribe my channels and share with your friends. Here you can find the textbook exercise solutions. स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर है सभी के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है उसके आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको स्टैंडर्ड 9 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां जाके आपके सभी चैप्टर को वहां पर आपको मिल जाएंगे। सो okay, see the playlist of a channel, subscribe and share with your classmate, that maybe this chapters, the exercise are very helpful for you. Okay, while writing you make sure that your handwriting must be neat and clean and you will write the answer of point wise. जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपके जो आंसर है वो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, डू नॉट राइट देम इन अ पैराग्राफ्स। और ऐसे एग्जाम में भी आप कीजिए, ठीक है, राइट देम इन अ पॉइंट वाइज। और आपका प्रेजेंटेशन, आपका राइटिंग सही तरह से होना चाहिए। Okay, let's start the discussions of lesson number 16, chapter number 16, climate exercise, textbook exercise. Okay, answer the following questions in a brief. Look at number one. Himalaya is a natural wall which protect India. How? So Himalaya, which is located in a northern part of India. Okay, northern eastern side of India, which is considered the natural wall of India. How? Okay. So wind blow from Central Asia towards India through northeast direction. So northeast direction से सेंट्रल इंडिया की सेंट्रल एशिया से इंडिया की साइड से इंडिया तरफ से विंड आते हैं, मतलब विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दे एंटर इन द पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। the cold wind which blows from the central Asia is protected by this Himalaya. So Himalayas offset the extremely cold winds. The cold winds which blows from the central Asia से इंडिया की साइड आते हैं, चाइना, ओके, मंगोलिया से जाके चाइना से तिब्बत होकर इंडिया की साइड आती है ये विंड्स, बट हिमालय जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो हिमालय ऑफसेट द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड, जो एक्सट्रीमली कोल्ड विंड आते हैं, बहुत ही ठंडी हवा चलती है, उसको ऑफसेट करता है, उसको स्टॉप करता है, रुका के रखता है। सो कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्ट नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम अ सीवर कोल्ड। सो नॉर्थन इंडिया को बहुत अच्छी, जो ज़्यादा ठंड से वो बचाने का काम करते हैं। दिस प्रोटेक्ट इंडिया from the severe cold. Thus, North India temperatures does not fall below freezing point. So, because of the Himalaya, the northern Indian temperatures, because of Himalaya, so northern Indian temperature does not fall below freezing point. वो below freezing point में नहीं जाता है, देखिए 4 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, मतलब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे वो माइनस में नहीं, -1 2 3 में नहीं जाता है। सो विंटर एक्सपेक्ट द हाई माउंटेनियस रीजन, हाई माउंटेनियस एरिया, दोज आर द हाई माउंटेनियस रीजन विच आर इन हिमालयन रीजन। वहां पर आपको माइनस में टेम्परेचर देखने के लिए वहां पर मिलेगा। For the like a temperature of Shimla as the month of January remains 5 degree Celsius. हिमालय, हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज है, वहां पर आपको माइनस में टेम्परेचर मिलेगा, वहां पर देखिए स्नोफॉल होता है। Now, sorry, second number, explain the trade winds. Now, these trade winds originate due to the tropical high pressures belt in a northern hemisphere. Okay, so in a northern hemisphere, in a northern we have the southern hemisphere and a northern hemisphere. These trade winds originate due to the tropical high pressure. So tropical area जो है, tropical high pressure की वजह से वहां पर northern area के अंदर इसका क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से वहां पर विंड का फॉर्मेशन होता है। जनरली विंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरीके की तरफ से ये विंड्स ब्लोज होता है। हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, देखिए टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। So in the past, these winds were used for the oceanic trade commerce. Look at these winds which are originated in blows towards India, Indian Ocean के साइड, अरेबियन सी के साइड जाते थे। ये जो winds है वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे वर यूज फॉर द दे वर यूज फॉर ओशनिक ट्रेड। अभी तो हमारे पास डीजल इंजन से चलने वाली शिप है, एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली शिप है, बट उस टाइम स्टीमर इंजन का शुरुआत है, उससे भी पहले
जब इंजन नहीं था, तब जो बोर्ड थी वो हवा का जो फोर्स लगता था, विंड की डायरेक्शन की वजह से वो चलता था, बोर्ड शिप जो चलाते थे। So they were used for the okay, oceanic trade. ये विंड की डायरेक्शन से ओशनिक ट्रेड होता है, विंड डायरेक्शन के अंदर शिप अब बोट चलता था। So they were called as a trade wind. इसकी वजह से ये विंड को ट्रेड विंड से जाना जाता है। The wind which are used for the trading, for the moving of a boat, स्टीमर को चलाने के लिए विंड का फोर्स यूज किया जाता था। कपड़े बनाकर आपने देखा होगा बोट के अंदर लगाया जाता है, उसकी वजह से बोट चलती रहती है। So that were considered trade wind. These winds deflect due to the Coriolis force. Coriolis force क्या होता है कि Coriolis because of rotations of Earth, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो विंड डायरेक्शन जो चेंज होती है उसको कोरियोलिस फोर्स से जाना जाता है एंड ब्लोज टुवर्ड्स द, वो धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ फ्लो करते हैं। एज दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम ओवर द लैंड मासेस दे कंटेन अ लेस मॉइस्चर, ज्यादातर लैंड मासेस की तरफ से आते हैं तो उसके ऊपर मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है, तो बारिश नहीं होती इसकी वजह से। So Indian Ocean is located to the south of India. इसके we know that Indian Ocean is located South India के अंदर located, Arabian Sea है और west और Bay of Bengal east की direction पर located है। And due to this vast water mass, the winds okay, passing over this absorb the moisture and bring the rain in India. Somehow ये लैंड बॉडीज के ऊपर से पासिस होता है और उसके बाद ओशनिक बॉडी के अंदर एंटर होता है। ओशनिक बॉडी से ओके मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और वो बारिश देता है। Third number, in how many parts has the Indian Meteorological Department divided the seasons of India? Which are they? So Indian Meteorological Department of Government of India at Delhi has divided the climate of India into 4 seasons. Which are the 4 seasons? Cold weather season, that we call them winter, then the December to the February month. December to the February month. Hot weather season, we call them summer, March to May month. Third number, advancing monsoon, rainy season beginning of June, so June to September month, and retreating monsoon, October to November month. So these are the Indian Meteorological Department, the Department of Government of India, has divided the 4 season को, Indian season को and Indian climate को 4 पार्ट में डिवाइड किया, cold, hot season, advancing monsoon and retreating monsoon. Fourth number, into how many branches are the southwest monsoons wind divided? Okay, which are they? Southwest monsoon okay, कौन सी दो branches के अंदर divide होता है? Due to the peninsular shape of South India, the southwest monsoon winds are divided into 2 parts. Southwest monsoon की वजह से इंडिया के अंदर बारिश होती है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अरेबियन सी करंट, सम ऑफ द winds which pass over the Arabian Sea, and another Bay of Bengal current, because of our peninsular shape of India, India का peninsular shape है, उसकी वजह से one of the current which enter in Arabian Sea, that is Arabian Sea current, and Bay of Bengal के अंदर आता है, उसका Bay of Bengal current से जाना जाता है। Question to answer the following questions as directed. Okay. What changes occurs with the increase in altitude from sea level? So what changes occurs with the altitude of increase in a sea level? Okay, altitude, height which increasing from a sea level से upside जाता है, इसका क्या मतलब? When height is increasing from sea level is considered a zero. Sea level is considered zero माना जाता है। जैसे height altitude increase होता है तो उसमें क्या फर्क होता है? So as we go higher from a sea level, that atmosphere and air pressures and air temperature decrease. Look at when height increase, height from the sea level increase, it decrease the atmosphere. Okay, in the sea level atmosphere के अंदर air pressure, okay, air pressure and air temperatures दोनों decrease होते हैं। एटमोस्फियर के अंदर जब हाइट इंक्रीज होती है तो एयर प्रेशर एज वेल जो टेम्परेचर होता है वो दोनों डिक्रीज होता है। Now, most air cools down when it rise and gives rain. Generally, जो दो ज़्यादा okay, कूल एयर जो होती है जब राइज होती है धीरे धीरे वो ठंडी होती है, उसके बाद वो बारिश देती है। गिव्स रेन विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, हाइट जैसे इंक्रीज होगी टेम्परेचर कम होगा, हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर कम होगा। जो कूल विंड्स होगा जो तो धीरे धीरे वो ठंड में ट्रांसफर होगा, मॉइस्चर होगा वो धीरे धीरे ट्रांसफर होगा और बारिश देगी। सो विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन रेनफॉल इंक्रीज, तो ज्यादातर माउंटेनिश एरिया के अंदर बारिश ज्यादा रहती है। एंड ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड्स द हिमालयन पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड, हाई अल्टीट्यूड की वजह से हिमालयन जो पीक है स्नो कवर्ड है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वहां पर बहुत ही कम रहता है, माइनस के अंदर भी टेम्परेचर आपको वहां पर दिखने के लिए मिलता है। स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर।
So in general, air temperature जो decrease होता है 1 degree Celsius on ascent over 165 meter. One height from a sea level increase, height from sea level increase 165 meter. जब सी लेवल से 165 मीटर हाइट इंक्रीज होता है तो वहां पर टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है? इट डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब आप हाइट 1000 मीटर पर जाओगे और 1000 मीटर की हाइट पर जाओगे तो सी लेवल पर जो टेम्परेचर होगा और जो 1000 मीटर पर टेम्परेचर होगा उसके डिफरेंस होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6 या 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का आपको को फर्क मिलेगा. सो हाइट इंक्रीज तो जनरली उसकी वजह से समर सीजन के अंदर पहाड़ों के अंदर हिल स्टेशन के अंदर जनरली हम घूमने के लिए जाते हैं. तो हिल स्टेशन पर जाने का कारण ये है कि हिल एरिया है, माउंटेन एरिया से हाइट पर है, वहां पर आपको ठंडक मिलती है. तो हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर बोथ डिक्रीज. Second number, what is mean by October heat? What is mean by October heat? October heat का mean मतलब क्या है? So during the October November, a season of dry and cool winds start instead of a hot summer. So generally October and November, in the month of October and November month, generally okay, hot and cool wind started blowing instead of hot summer, and clear sky and increasing temperature. Clear sky is during this time, temperature slowly increase, are a main characteristic of a retreating monsoon. So it is a season of a retreating a monsoon season है. And so will contain moisture कि उसकी वजह से बारिश हो चुकी है, अभी retreating है मतलब जो बारिश हो गई है, जो विंड जो नॉर्दर्न इंडिया के साइड पर पहुंच चुके हैं, प्रेशर बेल्ट चेंज होने की वजह से नॉर्थ इंडिया से विंड जो डायरेक्शन है वो फिर से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ हो जाती है. तो अगेन विंड स्टार्टेड ब्लोइंग टू द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी की तरफ आने की शुरुआत करते हैं और कभी कभी ये रीट्रीटिंग में बारिश भी लाते हैं. ज्यादातर ये साउथ इंडिया के अंदर बारिश देते हैं. So soil contains moisture, day temperature increase and nice cools and pleasant. Okay, ज्यादा ये सीजन के अंदर क्या होता है, डे का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, नाइट्स रिमेन द कूलर्स, प्लीजेंट रहती है, एंड डे वेदर्स इज वेरी परप्लेक्सिंग ज्यादा टेम्परेचर और मॉइस्चर की वजह से ये सब टेम्परेचर होता है, परप्लेक्सिंग टेम्परेचर और काइंड ऑफ एटमोस्फियर वेदर आपको लगता है. एंड ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, एंड विद सिचुएशन इज नोन एज अक्टूबर हीट, जिसको हम भादरवी ताप से भी जाना जाता है. कंसिडर्ड भादरवी ताप, जो भादरवा मंथ है उसके अंदर जो गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, उसको अक्टूबर हीट और भादरवी ताप से जाना जाता है. और विच रीजन्स डू द मॉनसून विंड्स coming over from Bay of Bengal give a rain? Okay, on which reason? So बे ऑफ बंगाल की साइड से जो करंट जाता है वो कहाँ कहाँ पर बारिश देता है. So southwest monsoon winds contain maximum moisture and first enter in West Bengal and then reach up to the Meghalaya. So one of the branch of Bay of Bengal की जो branch होती है, they enter in the West Bengal में enter होती है, then is मेघालय के अंदर वो जाके बारिश देती है. And there are there the slope of Garo, Khasi and Jaintia. There are the three mountain ranges, three hilly areas, Garo, Khasi and Jaintia. These are in a Himalaya. So because of these reason, hilly regions, receive a heavy rainfall, highest rainfall received in Meghalaya. They cross over West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Punjab and reach in Haryana. So they deflected from वो मेघालय से डिफ्लेक्ट होते वो नॉर्थ इंडिया के साइड एंटर होते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर जाते हैं, वेस्ट बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश और पंजाब तक, हरियाणा तक ये बारिश देती है. So the moisture content decrease as advance further. Okay, advance further जो पहले वाले प्लेसेस आते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है, धीरे धीरे आगे वाले जो प्लेसेस आएंगे वहां पर बारिश धीरे धीरे कम होती है. जब मोइस्चर कम होता है तो बारिश भी वहां पर कम रहती है. So further, both these currents coming from Arabian Sea, one of the current southwest monsoon, one of the currents enter into the Arabian Sea, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होता हुआ आगे जाता है, और एक जो करंट है बे ऑफ बंगाल का जो करंट है वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार से जाके उठके, तो दोनों ब्रांचेस होती है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांचेस और अरेबियन सी वाली ब्रांचेस है, बोथ मर्ज इन नॉर्दर्न हिमालयन रीजन. तो नॉर्दर्न हिमालय वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश एरिया है, दिल्ली वाला रीजन है, हिमाचल प्रदेश एरिया है, वहां पर दोनों ब्रांचेस मर्ज हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस somehow snowfalls also occurs in occasionally in the part of our north India. नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न रीजन पर ये बारिश देती है. Fourth number, which phenomena of far away regions affect Indian climate? So which are the some phenomena which are not occurs in India, they are occurs from
फार फ्रॉम इंडिया, इंडिया से दूर की साइड बहुत दूसरे कंट्री के अंदर अलग जगह पर ये फिनोमिना होता है, क्लाइमेटिक फिनोमिना, फिर भी वो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। कौन कौन से हैं? देखिए, समटाइम्स पेक्युलर फिनोमिना टेक्स प्लेस over the place located far away from India, which create a temporary changes in long terms as a climatic pattern। ये सब फिनोमिना जब होते हैं तब उसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेटिक पैटर्न पर बहुत ज्यादा ही फर्क होता है। लाइक ए फिनोमिना लाइक ए jet stream, those fast moving winds। Some detailed explanations which already given in a textbook, you can see the like you know, okay, jet stream, fast moving winds, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इंडिया के वेस्टर्न डायरेक्शन के ऊपर जो डिस्टर्बेंस होता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, मेडिटेरियन सी और उसके नजदीक में जो डिस्टर्बेंस होता है साइक्लोनिक, उनकी इफेक्ट नॉर्थ इंडिया और उन साइड पर इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। एल नीनो, दिस आर द हॉट एंड कोल्ड ओशनिक जो वे है, ओशनिक बोल रहे कि El Nino and La Ninos are there. ITCZ, Indian Tropical Convergence Zones, have affected Indian weather as a great extent. So ये जो अलग अलग क्लाइमेटिक फिनोमिना है, वेदर फिनोमिना जो होती है अलग अलग जगह पर जो फिनोमिना होती है, उसकी वजह से दैट इंडियन क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। Give to the point answer of the following question. Question 3, number 1, due to which reasons does the phenomena of a change in season occurs? How change in season? Okay, season कैसे change होती है इंडिया के अंदर? So revolutions of Earth around the sun and her axial tilt. Okay, revolutions of Earth has a two movement. Okay, revolutions and rotations. Rotation of Earth cause day and night. Rotation of Earth cause day and night. Revolution of Earth around the sun. Okay, sun is here, Earth is revolving around the sun, Earth is revolving around the sun, and because of revolutions we have a different season। and is a axial tilt, Earth is a tilted on an axis। उसकी जो टिल्ट आपने देखा होगा, अर्थ का जो टिल्ट है, आपने अर्थ का ग्लोब आप देखोगे, ग्लोब देखो तो आपको थोड़ा टेढ़ा दिखाएगा, थोड़ा 23.5 डिग्री इज अ टिल्टेड, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, अपनी जो रोटेशंस कर रहा है वो 23.5 डिग्री टिल्ट होके रोटेशन कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ अ टिल्ट, because of a tilt of its axis and revolutions, these are the major changes in a season। उसकी वजह से इंडिया के अंदर अलग अलग 4 टाइप की सीजन होती है। So axis of Earth is tilted 23.5 degree and makes angle of 66.5 with the orbit। So Earth का जो orbit है, like समझ लो कि ये Earth का orbit है, this one is orbit, और orbit means fix the path where Earth is revolving around the sun। Sun इस center के अंदर ये sun है, Earth is revolving around the sun। This okay fixed path is known as orbit, और orbit है, और इसके अंदर Earth आई हुई, Earth is moving। अर्थ का जो मेन एक्सिस है, एक्सिस मतलब जिसके ऊपर रोटेट एक पॉइंट पर, जैसे इमेजिनरी लाइन है जो लाइक पेन जैसे रोटेट होता है उसकी एक्सिस पर, अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, इमेजिनरी लाइन वहां पर कोई ऐसा पेन के अंदर एक्सिस होता है वहां पर नहीं है, बट लेकिन इमेजिनरी लाइन इट्स रोटेटिंग इन एक्सिस। जो एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है, एक्सिस है वो टिल्टेड है, कितना है 23.5 डिग्री से, अर्थ है थोड़ा टेढ़ा ऐसे झुका हुआ है, झुका हुआ है, और वो एक्सिस एंड उसका जो ऑर्बिट है, एक्सिस है इसका ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, इसका जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल बनता है वो बनता है 66.5 डिग्री का, ये एंगल बनता है एक्स, उसका टेल, इसका एक्सिस, अर्थ एंड उसका एक्सिस, अर्थ है और उसका जो एक्सिस है वो मिला के अर्थ का एक्सिस, ये वाला अर्थ का एक्सिस एंड ये ऑर्बिट, ये वाला कॉर्नर, ये जो वाला एंगल बनता है, वो जो एंगल बनता है कितना है 66.5 डिग्री। ऐसे देखा जाए अगर ये 90 डिग्री ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये जो एंगल है वो कितना है 23.5 डिग्री, ये जो एंगल है 23.5 डिग्री एज अ टिल्ट है, थोड़ा टिल्ट है। ओके, तो ये जो 66.5 डिग्री का एंगल उसके ऑर्बिट के साथ बनाती है। Now seasons are caused due to the axial tilt because of tilt of Earth, and regions receiving more sunlight experience summer. Those areas which receive more sunlight, they have a summer season, and those areas which receive less sunlight, they have a winter। Sunrise for vertically over Tropic of Capricorn। Tropic of Capricorn के नाम से 22nd of December, Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के अंदर पास होता है 23 डिग्री, 23.5 बोला जाए, 23.5 जो है वो इंडिया के अंदर से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
नॉर्थ के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, साउथ के अंदर से मेन लेटीट्यूड से वो आता है। और ये जो मंथ के अंदर, दिसंबर के मंथ के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 22 दिसंबर, वर्टिकली सीधे सनराइज वहां पर होते हैं। सो इसकी वजह से इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर विंटर सीजन होती है दिसंबर मंथ के अंदर, विंटर सीजन के सनराइज पोल वर्टिकली और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सनराइज वहां पर डायरेक्टली वहां पर जाते हैं, इसको जिससे टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होता है। सो देखा जाए तो इस टाइम के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर सीजन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर सीजन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिसंबर मंथ के अंदर क्या होगा, विंटर सीजन होता है। Same look at so the southern hemisphere experiences summer and the northern hemisphere experiences a winter. Same year, so nights in India are longer and become a cooler. The sun rays are vertical over Tropic of Cancer on 21st June. Okay, this is Earth. Similar. Okay. Let me draw it properly somehow. Okay, Earth. Imagine this one is a equator, 0 degree equator. Here we have the one of the line which is considered Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn here. Tropic of Capricorn 0 degree, 23 degree, 23.5 degree. This one is a northern, and 23.5 that is considered the southern hemisphere. So during the month of December, 22nd of December, these are the area directly sunlight falls over it. So December month के अंदर slanty sun rays in a northern hemisphere. This one is a northern hemisphere, this one is a southern hemisphere. And okay, उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्लेंटी सनराइज होता है। 21 जून के अंदर क्या होता है कि सनराइज डायरेक्टली फॉल्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या होता है कि सनराइज डायरेक्टली आते हैं एरिया के अंदर। तो these area which receive a more sunlight, ये एरिया के अंदर क्या होता है, सनलाइट ज्यादा आती है। दिस एरिया रिसीव स्लेंटी सनराइज, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्लेंटी सनराइज सनराइज होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। दिसंबर के अंदर उल्टा हो जाएगा, दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में जो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर हो जाएगा। ओके, so that because of a tilt and because of a revolutions of our earth it occurs, a tilt or revolution of earth की वजह से ये होता है। Tropic of Cancer 21st, and this okay, it occurs here. So state briefly of the factors affecting the climate. Which are the factors which affect the climate? Look, there are some factors on the earth which controls the distributions and amount of elements of climate. These are called the climatic factors. Some of the climatic factors which are here, look at latitudes. Now climatic types on the surface of earth change according to the latitudes of a place or concern. A latitude, where exactly place is located here. Okay, this is the earth and this one is the equator. It's the equator, equator. If a place is located near to the equator, if the place is located near to the equator, okay, equator के नजदीक है, they have the more sunlight, टेम्परेचर ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगी। जैसे प्लेस से प्लेस दूर होगा, नॉर्थ पोल के हिसाब से साउथ पोल में जाएगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो इट डिपेंड द climatic conditions where exactly that place is located here. Earth changes according to the latitudes. Yeah. So there is a distance about 111 kilometer between two latitudes. What is the distance between two latitudes? We have the 90 latitude northern hemisphere and 90 latitude in the southern hemisphere. So that 111 kilometers between two latitudes. So sunrise fall vertically over the equatorial regions, hence or throughout the equatorial regions, area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो एरिया है, इक्वेटोरियल एरिया है, इक्वेटोरियल रीजन से जाना जाता है। इसे थ्रू आउट द ईयर अगर वो इक्वेटर के नजदीक है तो टेम्परेचर वहां पर ज्यादा रहता है। So distance from a sea, water and land have the different capacity to conserve and to part with the solar heat. Look at distance from a sea, water and land has a different capacity to absorb and to release the heat. एब्जॉर्ब और रिलीज करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है। पानी को मतलब गर्म होने में टाइम होता है, उसकी हीट भी धीरे ठंडा होने में भी उसको टाइम लगता है। लैंड जल्दी जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है, ठंडा भी जल्दी हो जाता है। So the place which is located near to the sea, if it located far from the sea, it has a climatic difference. उसके अंदर क्लाइमेट का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। As a result, coastal region experience a temperate climate. Temperate climate coastal एरिया के अंदर आपको ज्यादा ठंडी और गर्मी नहीं लिखेगी, क्योंकि ज्यादा गर्मी और ठंडी नहीं होती है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया और ओशनिक इफेक्ट वहां पर आपको देखने के लिए मिलती है।
while the climate become continental kind of climate होता है जब distance from sea is increased. So interior part of the place where sea coast नहीं है, coastal area नहीं है, ज़्यादा land area है, वहाँ पर ये temperature हमें difference आपको देखने के लिए मिलता है. Altitude, as we go higher from the sea level, the atmosphere, air pressure, air temperatures decrease. Altitude we already discussed previously, same. So due to the high altitude, the Himalayan peaks remains snow covered throughout the year. So moist air cools down when it rises and gives a range and increasing altitude of mountains, and the rainfalls increase as a okay, because of temperature decrease, as a whatever the moist air जो होती है धीरे धीरे cools down हो जाती है. Atmospheric pressure and winds, different atmospheric pressures and winds होती है, that also makes effects on climate of India. India falls in the path of a northeasterly trade wind, northeasterly trade wind के अंदर आता है इंडिया का part, and these winds originated due to the tropical high pressures built in the northern hemisphere. And so southwest monsoon, another okay, not as a trade wind है, दूसरा जो monsoon during the rainy season के अंदर जो winds आते हैं, that is called southwest monsoon. Okay, winds that contain moistures and bring a rain in India. Third number, writes notes on the cold weather season of India. We need to write about the cold weather. So cold weather आपको northern India का अलग रहेगा, southern India के अंदर भी थोड़ा okay, winter season थोड़ी अलग रहती है. So India, the 3 months duration from December to the February is considered as a winter season. Okay, sunshine vertically over the southern hemisphere between 22nd of September to 21st of March. Okay, ये जो 21st September से 22nd of September से लेकर 21st of March, ये ड्यूरेशन के अंदर सन वर्टिकली कहाँ पर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर. सो सदर्न हेमिस्फीयर वर्टिकल मीन्स डायरेक्ट सन रेज फॉल्स ओवर द सदर्न हेमिस्फीयर. तो ज्यादातर टेम्परेचर कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहेगा वहां पर. तो नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर टेम्परेचर स्लेंटी सन रेज होगा, तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा. टेम्परेचर कम होगा था, कम होने की वजह से कौन सी सीजन होगी, यहाँ पर विंटर सीजन आपको देखने के लिए मिलेगी. So India is situated in the northern hemisphere, so it's under the influence of a less heat. So India, we know that India located in the northern hemisphere. So in the month of this September and these are the March month के अंदर, okay, ये क्या होगा, that's India is situated in northern hemisphere, so it's under the influence of a less heat, and so sun rays, okay, sun rays and less temperature is experienced in the part of in the one of seasons of a cold weather season. Now winds blow from a northeast direction from Central Asia. Look at these situations. During these situations, during September to the March month, generally winter season इंडिया के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो मंथ होता है वहाँ पर ज़्यादा ठंडी रहती है. ये इस टाइम के अंदर क्या होता है कि ये 20 सितंबर मंथ टिल मार्च मंथ के यहाँ पर मेंशन किया गया है. So that winds blows from northeast direction from Central Asia. ये सिचुएशन का दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ के अंदर, ये मंथ के अंदर क्या होता है कि विंड्स फ्लो, तो सेंट्रल एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया जो वहां से वहां पर हाई प्रेशर रहता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर कम होने की वजह हाई प्रेशर होगा, तो विंड मंगोलिया, चाइना से इंडिया की तरफ आती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाती है. दिस विंड्स आर ड्राई कूल्स वेदर, सो रिमेन्स ड्राई एंड कोल्ड इन इंडिया. After the snowfalls, Himalaya, the colds and heavy winds rush towards the northern Indian plain. Now, as a result, the plain along with Gujarat, Rajasthan are under the grip of a cold waves. December, January, February month के अंदर ज़्यादा. So temperature decrease suddenly, frost in some area and disturb the cotton crops. Temperature does not fall below freezing point during winter except from the high mountain regions because of central Himalaya offset the extremely cold winds coming from Central Asia and protect India from a severe cold. South India is situated in a torrid zone. South India torrid zone के अंदर, torrid zone, the torrid area किसको बोलेंगे, like the area between tropic of, like this one, equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn. This 0 degree is equator, area between, okay, this is the area between tropic of Cancer and tropic of Capricorn. Tropic of Cancer और tropic of Capricorn के बीच वाला जो area है, it is considered the torrid zone. So tropic of Cancer which divide India into two parts. So southern part generally गुजरात से देखा जाए साउथ के अंदर हो, और torrid zone के अंदर रहता है. टेम्परेचर थोड़ा नॉर्थ इंडिया से साउथ के अंदर आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा.
So it has a peninsular shape, so its inner area is not very far from the sea coast. So this area does not feel severe cold like नॉर्थ इंडिया का जितनी ठंडी होती है उतनी ठंडी आपको साउथ इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी. So in India, winter is considered to be very pleasant and healthy seasons. They are shorter and nights are longer and cooler. Describe the effects of a climate on a human life. What are the effects of a climate on human life? So irregularities of a rains has resulted in the unpredictable agriculture production. So unpredictable, बहुत बारिश सही होती तो प्रोडक्शन सही तरह से होता है. अगर बारिश कम होती है, scarcity of rainfall, less rainfall, irregularities of a rainfall cause a destructions of a production. So unpredictable agriculture production का कभी अच्छा होता है, कभी खराब भी होता है. So where irrigation is not possible, only one crop can be taken depending on the rainfall. When scarcity of rainfall, when irrigation is not, so one crop can also be only one crop can taken there. The beginning of beginning as well as the closure of a rainy season uncertain. So uncertain. Indian rainy season is depend on southwest monsoon. So if southwest monsoon is regular, irregular है. So southwest monsoon irregular. मतलब कब onset of a monsoon कभी टाइम पर शुरू होता है, कभी मानसून लेट शुरू होता है, कभी जल्दी आ जाता है, तो उसकी वजह से क्रॉप भी फेल होते हैं. सो टाइम्स वाटर नॉट अवेलेबल प्रॉपर टाइम, सो क्रॉप डिस्ट्रक्ट एंड सीड्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑल्सो caused. Sometimes there is a downpour of a rain. So downpour of a rain, when it rains a more shorter time, crops also disturb because of a heavy rainfall. Now river gets flooded and cause soil erosion, which long term reduce a crop. Look, continuously heavy rainfall, even when floods occurs in a rivers, उसकी वजह से soil erosion होता है and it's a long term effect. उसकी वजह से fertility of soil which reduce and crop production भी कम होता है. As the farming is not yearly year long work, many agricultural laborers, okay, farming ज़्यादातर रेनी सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, पूरे साल का काम भी यहाँ पर नहीं होता है. तो समटाइम्स those who are agricultural laborers, they need to migrate to city for the employment. Now due to the irregular rain, some agro-based industries face problems as they do not get their raw material like cotton, sugar cane, tobacco, etc. So due to the irregular rain, ये common ही आएगा यहाँ पर. Okay, irregular rain, some agro-based industries face a problem. Agro-based industry which take the raw material from agriculture, food processing industry, नंबर industry जो है, जो agriculture पर based industry है, उसको भी effect हो सके. Cotton textile industry है, sugar cane industry, tobacco industry. Problems of drinking water also become acute due to the irregular rain. Because of irregular rain, potable water may not be available. Okay, question answer MCQ here. Is answer is displayed here. Look at when the sun are vertical over Tropic of Cancer, which season? Vertical है Tropic of Cancer के ऊपर, this considered the what season? Which place near Cherrapunji is famous for heavy rains? Monsoon, that is a heavy highest rains occurs in this Meghalaya, Cherrapunji. Which Himalayan phenomena affect more, creating cold waves over Gujarat and Rajasthan in a winter season? So it's a snowfall. So which Himalayan phenomena affect more in creating cold waves over Gujarat and Rajasthan? इसमें क्या है? Okay, ये. Now next number. Okay, by which name are the some showers in a showers in the showers in a May along Malabar coast. Malabar coast के अंदर जो showers होता है उसको किससे नाम से जाना जाता है? फोर्थ के अंदर सी है आम्रवर्षा. Which is the season of retreating monsoon का season कौन सा है? That is October November month. Which of the following statement is a true? Different statement is given. Which statement is a true statement? में कौन सा statement true statement है आपको find out करना है. So C option है कि days are shorter and nights are longer in the winter. Winter के अंदर days shorter होते हैं, nights longer रहती हैं. So this is the exercise of lesson number 16. Hope you like these videos. And still, if you have not subscribed the channels, click on subscribe button to subscribe the channels and share with your friends. If you have a query, you can send me comments. if कोई query है तो comment दीजिए. So okay, आपको and share this videos with your friends. Thank you.